equilibrium of rigid body and moment of inertia, introduction of moment of inertia. Okay. एंड कल हम स्कूल में जो करेंगे वो है different theorem of moment of inertia to find out moment of inertia around parallel axis, around perpendicular axis. Okay, all these theorems. एंड रेडियस ऑफ चाइडेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लेते हैं, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन एंड टू फाइंड आउट different type of moment of inertia of different type of rigid body. That can be a hollow sphere, cylinder or ring. ठीक है ना, ये सब हम क्लास में देखेंगे. तो आज थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ये लिखने वाला पार्ट है. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. तो पहले क्या जानना है इक्विलिब्रियम चीज होता क्या है. जो हम बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम, जब लीनियर मोशन में भी तुम लोग पढ़े हो, लीनियर मोशन में, राइट, लीनियर मोशन में भी पढ़े हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. और हमने क्या मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन भी किया है, राइट. So the equilibrium is two type. Number one, linear equilibrium, and number two is rotational equilibrium. So when you are discussing about equilibrium of any rigid body, and you know what is rigid body, right? Rigid body it is a certain kind of body where all the particles are fixed. That is, the relative position of the particles are not changing with respect to each other. If you are considering any body as a rigid body, then all the particles here are constant. Matlab, they are not changing its position with respect to time, right? So for a rigid body, you can we have already discussed about external force and internal force, right? External force and when you are applying external force, that is translatory motion and rotational motion. इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है इफ योर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन द सेंटर ऑफ mass, then it is translatory. If it is away from the center of mass, it is translatory plus rotational, right? So equilibrium is two type. Number one, translational equilibrium, and number two, rotational equilibrium. So तो डेफिनेशन क्या लिखना है, जो हमने यू हैव टू राइट ओनली दोज थिंग दैट आई एम हाईलाइटिंग हियर. ओके, don't write extra thing, that is it is a page of a book. So a rigid body is said to be equilibrium if the linear momentum and angular momentum of a rigid body remains constant. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, when it is in equilibrium, that means
either linear momentum is conserved or angular momentum is conserved. Linear momentum is for linear motion, right? Mass into velocity, and angular momentum is p into v, right? P into r, p क्रॉस r, और इसका हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं ना। ये दोनों अगर कंजर्व्ड है तो हम क्या बोलेंगे इसमें, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, राइट? द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. So equilibrium is two type. Number one, translatory, and number two, rotating reduce नहीं होगा. If you are applying a external force on the body, suppose you are rotating a wheel. बच्चों खेलते हैं ना ये से, व्हील से, वो क्या करता है, व्हील को हाथ से घुमाता है. That means he or she is applying a tangential force on the wheel, and then the wheel is rotating, right? More the applied force, more the rotation or the speed of rotation, or the increase in speed of rotation. Yes or no? Then you'll see that if he does not apply any force here, if F equals to 0, then the wheel will rotate with a constant angular velocity omega. Okay, that means alpha equals to 0. Clear है? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा लिनियर मोशन में, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा सर्कुलर मोशन. ठीक है, ओके. अच्छा, ओके. तो हाँ, तो हम देखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो. रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो then you are getting that is the acceleration is zero. That is rate of change of momentum is zero, right? That is momentum is conserved, and when momentum is conserved velocity is constant. Yes or no? Because you are getting the formula F equals to dv dt. Sorry, dp dt. dp dt और p क्या है, p हमारा मोमेंटम है. अगर F इक्वल्स टू जीरो, F अगर जीरो है तो dp dt जीरो है, rate of change of momentum जीरो है. That means momentum के mass into velocity, that is velocity d dt of m into v equals to 0.
एंड जीरो किसका होता है? मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, राइट? यहाँ से तुम प्रूफ कर पाओगे। और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ से तुम्हें मिलेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर तुम देखोगे अल्फा rate of change of angular velocity equals to, right? अच्छा, एक बात बताओ, अगर टॉर्क अल्फा जीरो अल्फा क्या है? तो टॉर्क क्या, और व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज द, हमने प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या था ना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉर्क? एनीवन? प्रिंस बताओ। टॉर्क का फंक्शन क्या है? Sir, force into displacement F1 into D1. मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ force, axis of rotation, one object, you are applying force here, and this force will produce a moment on the object. That is, if it is at a distance d from the pivoting point or the axis of rotation, then tau equals to nothing but f cross t, right? ये तो टॉर्क है। तो ये हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर तुम ये करोगे, इफ यू आर ट्राइंग, हाँ, if you are trying to find out what is the angular acceleration, the angular acceleration is nothing but if external force is not equals to zero, तो वो क्या करेगा? वेलोसिटी को चेंज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो तुम्हें उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? डी ओमेगा डी टी, राइट? अगर ओमेगा ही कांस्टेंट है तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन जीरो मिलेगा, राइट? चलो, ये हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें टॉर्क अगर जीरो है तो यहाँ से इसके बाद ये वाला लिखोगे यहाँ से, ठीक है ना? Then we are moving forward towards stable equilibrium. What is stable equilibrium? देखो, equilibrium of an object depends on the position and you know that the potential of any substance also depend on the position, right? Yes or no? Would be minimum, sir. कोई भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल, हाँ, उसके ऑपोजिशन एंड शेप के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो तुम देखोगे, तुम्हारे पास अगर एक एग है, ठीक है ना? अगर एक एग है तो एग का, यू ऑल नो, all the substances in the universe always try, that can be atoms, that can be molecules, that can be anything, they are always trying to achieve lower potential state always, so that if you are placing some object, that can be a rigid body or that can be anything else, then you'll see that they always try to achieve the lower potential state, okay, so that they will rotate automatically, and this energy they are getting to rotate or to shift their position is from the
change in potential energy into kinetic energy, right? सपोज करो तुम्हारे पास एक स्लोप है। हाँ, इस स्लोप के ऊपर तुम कुछ सामान रखते हो। यहाँ पर तुम सामान रख के फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या करेगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आके अगर रुक भी जाता है, बट वो तो लोएस्ट अभी तक नहीं आया, राइट? इट विल अचीव द लोएस्ट पॉइंट व्हेन इट is touching the ground, right? Yes or no? The football is rolling from the top point, moving to the middle, and then it is also rotating to the lowermost position, that is on the ground. When it is touching the ground, here the potential is zero, right? Relative potential is zero. Then you are getting that it is a most stable equilibrium. So to achieve stable equilibrium, just look at this diagram. Then you are getting that it is a another state is called metastable. One is unstable, uh, not equilibrium, and another is stable equilibrium. इस टेबल में देखो, तुम्हें पोटेंशियल ग्राफ में देखो, इसका पोजीशन सबसे नीचे है। ध्यान दो, position for a stable equilibrium is the lowest position, and unstable equilibrium it is the highest position. That means the particle will still rotate or still move to the lower potential state, right? Okay, any doubt? तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन यहाँ से लिखोगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम when if it tends to regain its equilibrium position after being slightly displaced. इसका हम स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी बोलेंगे जब वो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट उसमें आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। और you can see that already written that minimum potential energy, right? Or you can say that the minimum potential state. An unstable equilibrium, the definition is said to be in unstable equilibrium if it gets further displaced from its equilibrium position after being slightly displaced. हाँ, displaced, हाँ, वो क्या करेगा, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा joined together, and if you are applying a rail like that, and you'll see that it is supported on that, and height, here the height is higher, here the height is lower. Then you'll see that it will move from lower height to upper height. It will move from lower height to upper height, and it will appear like it is moving opposite direction to the gravity, but actually not, right? If you see the position of the center of mass when it is nearer, जब वो नीचे था तब उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर था, जब वो ऊपर आ रहा है तब इट इज गेटिंग डाउन। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डाउन। कभी अगर हो सके तो हम दिखाएंगे लैब में। ओके, चलो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल,
उसके बाद है न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल क्या है? अगर ये ऑलरेडी स्टेबल में आ गया तब वो क्या हो जाएगा? इफ अ बॉडी stay in equilibrium position even after being slightly displaced and released, it's said to be in the neutral equilibrium, right? अगर वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है तब तुम जितना भी डिस्प्लेस करो वो उसी में रहेगा। ओके, नाइदर रेस्ट नॉर लोअर। एक ऑलरेडी इस पोजीशन में आ गया, अब तुम इसको जितना भी ये करो, ये एक मतलब व्हाट इज द की पॉइंट टू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल? That is the center of mass, position of the center of mass, right? If it is lowering after achieved the lowermost position, then it is stable equilibrium. Clear? Clear? Anyone? कोई डाउट है तो बताओ भी। कोई डाउट है? सेक्शन ए एंड बी। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। यस नो कुछ बोलो भाई। कितने बच्चे हैं? फिफ्थ, ओनली 5। एंजेलिना, सर क्लियर है। ओनली 5। नहीं 3 सर 3 13 है। let's go 13। बाकी सब सो रहा है क्या? Yeah, 11, sir. हम्म? चलो नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा, हाँ, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हमने तो मास मोमेंट देखा है ना, मोमेंट लिनियर एंगुलर मोमेंटम देखा है, राइट? एंगुलर मोमेंटम क्या है? For linear momentum, he momentum when the object is rotating, it is a one term of linear momentum. There is a cross product of the position vector and the velocity of the object. Y का angular momentum. But moment of inertia क्या है? So we all already know that what is inertia. What is inertia, right? Inertia क्या है? For linear motion, it is the tendency, right? Tendency to resist. Resist the motion, right? Tendency to resist the linear motion, the motion or state or direction of an object. Yes or no? Motion, that is about the inertia. Okay, your external force, or you have to apply it in motion. It always try to maintain the previous state, right? That is called inertia. But when you are looking at the rotational inertia, then you are getting moment of inertia. Okay, if an object is rotating around a certain point, इस object को देखो, this object is rotating, right? This object is rotating. So either if it is rotating in a certain direction, then if you are trying to change the direction or axis of rotation of the object, okay, if you are trying to change the direction or axis of rotation of the object, then it always try to maintain the initial direction or initial direction of rotation or axis. If you are trying to change this axis in that direction, then you will see that it will always resist your applied force, right? That means you have to apply some external force to change the axis of rotation or change the direction of motion. Okay, तब उसमें एक inertia प्रोड्यूस होगा जिसका हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, लिनियर मोशन में जो इनर्शिया था वो that was proportional to the mass. Here you will get it is directly proportional to the mass and the distance of the distance of the axis of rotation. Okay, and we will prove and we will see the equations and
the related terms here. तो इसमें देखो यहाँ पर तुम्हें देखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ motion every body continues to state of rest and uniform linear motion unless an external force uh, act to change the state. This inability to the body change of its state of rest or linear uniform motion is called inertia, जो तुम लोग सभी ने already we have learned in first law, right? Similarly, a body rotates around a given axis tends to maintain its state, okay, state of uniform rotation unless the external torque is applied to change the state. तो सिंपल क्या होगा, जब ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी दैट विल आल्सो ट्राई टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रोटेशन, दैट इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. Okay, if you are trying to change the angular velocity, then you have to apply external torque or external force. You have to apply external force that will produce a torque, and then the omega will change. That is, the angular velocity will change. Then you are getting alpha greater than zero. Okay, so these things are happening here. For to change the direction of the angular velocity, you have to apply external force, that is in terms of torque. Okay, the property of a body of rest or uniform motion about axis is called rotational inertia or moment of inertia. Okay, so moment of inertia का ये हो गया. Definition क्या लिखोगे? Moment of inertia about a fixed axis is defined as the sum of the product of all masses and the square of their respective distance. Okay, अगर एक मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से एम आर डिस्टेंस पे है, तो इसका जो आएगा एम आर स्क्वायर्ड. ओके, तो हम देखेंगे यहाँ से. Let us consider a rigid body. Let us consider a rigid body rotating with angular velocity omega. Axis of rotation is z. Axis r1 square plus m2 r2 square dot dot mn rn squared, right? हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें क्या मिलेगा? तो मिलेगा I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर्ड. तो इन पार्टिकल के लिए अप टू एन मिलेगा, राइट? So when you are trying to sum of all these values, then you are getting I equals to summation I equals to 1 to n mi ri squared, right? Then moment of inertia of n particle system, n particle system is equals to I equals to summation I equals to 1 to n mi ri squared. Okay, this is the formula. तो इसका तो अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये क्या है, डायमेंशन. डायमेंशन
So when you are trying to find out moment of inertia, the formula is simple, right? What is the formula? That is summation of mi ri, or if the object is a single object, then it is mr square, mass and the square of distance. Okay, so the moment of inertia is directly proportional to, then moment of inertia I is proportional to m, and I is proportional to r squared. ओके, तो अगर तुम्हारे एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर मास बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, वी ऑलरेडी नो दैट इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया is proportional to mass and distance of the axis from the axis of rotation, ठीक है ना। ये दो दो चीज के ऊपर डिपेंड होता है, तो हम डिपेंडेंसी भी दिखेंगे। अच्छा, तो डायमेंशन क्या होगा, देखो डायमेंशन क्या होगा, सिंपली एम आर स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर्ड टी पावर 0, राइट। फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर ना, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, तो ये आएगा डायमेंशन, एंड यूनिट क्या आएगा, तुम्हारा यूनिट मिलेगा सी जी एस एंड एस आई। सी जी एस में क्या मिलेगा, मास का है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट। ये दोनों यूनिट्स हैं, सी जी एस एंड एस आई, तो डायमेंशन एंड यूनिट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, लीनियर नॉर्मल इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस क्या है। देखो नॉर्मल इनर्शिया, छोटा सा नोट लिखो, नोट यहाँ पर नोट क्या लिखना है, नॉर्मल जो नोट कर, तो हमने यहाँ से डायमेंशन देखा, यूनिट देखा है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड द फैक्टर्स, ऑन व्हिच फैक्टर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडिंग ऑन। ध्यान दो, हम्म, इस दो चीज के ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास। ओके, ये मास के जैसा नहीं है, ओके। हाँ, नंबर वन डिपेंड्स ऑन द मास, नंबर टू साइज शेप ऑफ द बॉडी, नंबर थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ओके, नंबर फोर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। दैट मीन्स तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये इरेगुलर शेप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ यू आर टेकिंग दिस z axis as an axis of rotation, it is rotating in that direction. But when you are changing the axis, if it is x axis, now it is rotating in that direction, you'll see that the moment of inertia is changing, moment of inertia is changing, okay. So when you are changing the axis, the moment of inertia will change, right, that's why it is depending on the axis of rotation। अगर तुम्हारा सेम मास का ऑब्जेक्ट है बट उसका शेप डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, एक हॉलो स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर, दोनों में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा। दैट मीन्स क्योंकि हर एक मास के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, राइट, मास के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर शेप चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो इसका भी तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो चेंजिंग, okay, and it is nothing but the distance, depending on the distance of all individual masses from the axis of rotation, okay।
तो इसके लिए जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस मिलेगा, जब तुम इसको कंसिडर करोगे, इसके लिए एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यही पार्टिकल्स जो हैं, इसके लिए ये था, अभी इसके लिए डिफरेंट हो रहा है, राइट। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो हम वही देखेंगे इसमें। वी हैव पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर axis theorem. That means when you are trying to finding out moment of inertia of any geometrical shape in a certain plane or any regarding to any axis and parallel to this axis, ठीक है ना। ध्यान दो, अगर z इसका सेंटर ऑफ मास से पार होता है, if you are trying to find out moment of inertia from that axis z prime, then the value will change, right? So we will calculate all these things after that। इसमें दो थ्योरम तुम्हें याद रखना पड़ेगा। चलो, सो ये चार फैक्टर्स है, राइट। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडिंग ऑन। नेक्स्ट जो देखना है वो है एप्लीकेशन। ओके, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? So moment of inertia, always it is a tendency, okay, to maintain the rotational motion, or if you're trying to change the direction of rotational motion or the speed of the rotational motion of any irregular shape of any object, any kind of object, then you have to apply external force, and this external force will produce a torque and it will increase the angular velocity। तो देखो यहाँ पर एक व्हील है ना, इस व्हील को तुम कंसिडर करते हो डिस्टेंस फ्रॉम द व्हील piston, that is engine, proper engine। ये क्या है? It is a part of an engine, right? So by using the are just hitting the pistons, okay, or due to some force the piston is force is applied on the piston, and due to this force this will rotate by connecting all these levers with the wheel. It will rotate the wheel, right? And the wheel itself has some mass, and so that it always, it is axis of rotation is that point, it is called axis of rotation, axis of rotation। तो ये क्या करेगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू ये इट विल रोटेट, एंड ऑल द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एनर्जी इज स्टोर्ड, ओके, एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो ये जो फोर्स इंजन इसके ऊपर प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा इसमें, इस due to the torque and external force, the velocity is increasing, and these velocity and angular axis, and the moment of inertia of this wheel is increasing also. And when you are connecting some gears and small gears with this wheel, you can harvest this energy and can apply somewhere else, right? तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तुम देखोगे, इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील, ठीक है ना। डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज अ फ्लाई व्हील। So flywheel, what is the function of flywheel? Just I have already explained here. That is, the function of the flywheel is to store the energy in the form of moment of inertia, okay, or rotational energy। So the energy applied by the engine is discrete manner, okay। ये तो दोनों piston क्या है, they are providing energy in a discrete manner, but when it is connected with the flywheel, it is a massive wheel, okay ना। ये छोटा छोटा मोटा व्हील नहीं है, इसका एक
खुद का मास है, खुद का रेडियस है, तो इसका खुद का एक एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, right? To rotate this wheel, you have to apply some huge amount of energy to rotate this wheel. And you can see this kind of wheel, इसमें भी देखोगे, जो जूस वाले के पास होता है ना, हैंड से घुमाता है, देखे हो, जूस वाले के पास होता है ना, हैंड से वो घुमाता है, तो ये व्हील घूमता है, इसके साथ कुछ मैकेनिज्म है, तो पहले इसको जोर से घुमाता है, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गया। अभी वो क्या करेगा, छोटे गियर में उसको अप्लाई करेगा, राइट? तो इसका जो एनर्जी है, दैट इज ही इज अप्लाइंग सम फोर्स एंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग हियर। व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट इज स्टोर्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दिस एनर्जी इज हार्वेस्टेड जब जहाँ एनर्जी स्टोर, राइट? So it is a function of the flywheel. The old cars, you can see all this type of fly. If you look at the machines, okay, in the field, then you can see these flywheels also. Okay, so the main function is to store the energy. Okay, and so अगर ये इस flywheel अगर नहीं होता तो इसमें क्या होता, बताओ प्रिंस? फ्लाईव्हील अगर नहीं होता तो डायरेक्ट तो हम इसको एनर्जी को व्हील में लगा सकते हैं ना। अगर सोचो तुम्हारे पास फ्लाईव्हील नहीं है, मतलब ये एक मेटल का बड़ा Yes, वाला sir. व्हील नहीं है, तुम क्या करोगे? जितना एनर्जी इंजन में प्रोड्यूस होगा, तुम सीधा इसको गियर के साथ व्हील में लगा दोगे, फोर व्हीलर के, राइट? ये सुनो, तब तुम क्या देखोगे, जब इसका एनर्जी, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द इंजन और स्पीड ऑफ द engine, you'll see that there will be a certain jerking effect. When the energy is coming very huge amount of energy, then there will be a jerking motion, right? Because the engine is directly applying some energy here. There is no flywheel. But when the flywheel is in between, you'll see that the energy of the flywheel, then the flywheel is providing energy to the wheels. बढ़ाओगे घटाओगे, उसमें कोई जार्किंग इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो योर इसमें क्या होगा इस, ओके, तो stored through the gear system, it is storing to the wheel. When you are stop pedaling, force is equals to 0, then you'll see that the cycle is moving forward, although it is due to inertia, and it is also momentum inertia. Okay, because you have already stored some energy on the wheels, जो इसमें स्टोर ऑलरेडी हो गया, राइट? क्लियर है? ये भी इसमें एप्लीकेशन है। So these are the applications of the moment of inertia when you are storing some rotational energy on the wheel, and you can harvest the energy from there. It is example is flywheel. तो बाईसाइकिल में भी सेम थिंग है, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से लिख लेना, ठीक है ना, एप्लीकेशन। So the first part is very important, application of the flywheel. Next, relation between rotational kinetic energy and moment of inertia. आगे कुछ छूट गया क्या?
तो रिलेशन क्या है? विल डिराइव व्हाट इज द रिलेशन, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी and moment of inertia. So we all know that what is kinetic energy? What is kinetic energy? Energy stored half mv square. Energy stored by virtue half mv of square. motion, right? By virtue of ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो उसमें भी तो कुछ एनर्जी स्टोर होगा, राइट? जो हमने अभी भी डिस्कस किया. If it is in a linear motion, then it always possesses some kinetic energy. But when it is in a rotational motion, then also you'll see that it will possess some kinetic energy. Yes or no? So we all know the relation of velocity, linear velocity, and angular velocity. इसका सीधा करते हैं. So relation of linear velocity and angular velocity. ये linear velocity क्या है? That is called v, right? और v क्या है? dx dt. Yes or no? और angular velocity क्या है? ओमेगा. ओमेगा क्या है? Rate of change of angle with respect to the time. When you will see that s equals to r theta, theta equals to s by r, then the relation will be it is the length. हाँ. So r omega equals to, हाँ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ds dt equals to r d theta dt, right? Then you are getting v equals to r omega. यही तो फॉर्मूला था, यही तो रिलेशन था, राइट? तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए v1 equals to r1 omega, v2 equals to r2 omega, v3 equals to r3 omega. yes or no? ओमेगा हमने क्यों कांस्टेंट क्यों लिया है? बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, ओमेगा इज कांस्टेंट, मतलब एक ही रेट से वो घूम रहा है. अगर एक कोई भी इरेगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये हर एक पार्टिकल इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये क्या करेगा? तो इसमें क्या होगा? इसका भी ओमेगा सेम, इसका भी ओमेगा सेम, हर एक का ओमेगा सेम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके. So that you are getting some formula something like that, dot 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 Pn equals to Rn into omega. So if you are trying to uh, hmm, total kinetic energy, rotational kinetic energy, rotational kinetic energy, क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? हाफ m1 v1 square, हाफ m2 v2 squared, all the way to the nth particle, half is nothing but a moment of inertia of the system. Yes or no? ये मिलेगा हाफ आई ओमेगा. ओके.
Okay, because I equals to m r square, और इन पार्टिकल के लिए समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, राइट। So can you explain it again, sir? किसी को कोई डाउट है? एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। तो हमने जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया है, ये फॉर्मूला ठीक है ना यहाँ तक? अब तुम्हें क्या Yes, sir. करोगे, v इक्वल्स टू तुम पुट करोगे आर ओमेगा, v1 के जगह r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, ये वैल्यू पुट करोगे। यहाँ से पूरा वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, स्क्वायर था, राइट, स्क्वायर था, v का स्क्वायर था, तो तुम्हें मिलेगा v r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, राइट, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, m1 r1 square m2 r2 squared mn rn squared, then it is nothing but mr squared. So mr squared क्या है, mass into radius square, it is nothing but moment of inertia I, right, हमने वही तो लिखा है। So it is the total moment of inertia into square of angular velocity, clear? Yes, sir. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, रोटेशनल रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई, अगर ओमेगा का वैल्यू 1 है, ओमेगा का वैल्यू 1 है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू 2 इंटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सुनना, यही है रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कंडीशन क्या है, फॉर यूनिट एंगुलर मोमेंटम। तो अब तुम्हें डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, when a rigid body, when a rigid body is rotating around means axis of rotation, if its angular velocity omega is 1, then the moment of inertia is equals to twice rotational energy. Okay, ओके, ये पूरा यहाँ से लिख लेना। अगर हम यहाँ से लिख के आते हैं इसको, वन सेकंड, जो तुम्हारा है क्या लिखना है, लिखना है दिस पार्ट। ओके, इसके बाद ये लिख दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ रोटेशन। ओके, तो अब तक जो हमने किया है, एक रिलेशन किया है, क्या हो गया, रिलेशन। तो आज का क्लास हमने यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लेंगे जो विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन द क्लास। ओके, ये क्लास लेंगे because students will face some problem. It is very easy and simple. If you are trying to do center mass का जो तुम निकालोगे, तुम्हें सिर्फ दो चीज फाइंड करना है। For any geometrical shape, you have to find out the position of mass, right? अच्छा, थियरी थियरी समझ में आया है? Students, give me responses. Yes or no? Yes, sir. और बताओ किस किस को कहाँ पर प्रॉब्लम Yes, हुआ, sir. बताओ। मूविंग टू फर्स्ट पेज। हाँ, इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? व्हाट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी, बताओ, व्हाट इज रिजिड बॉडी? सेक्शन ए बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिजिड Sir, बॉडी? as we know, rigid means tough. स्टिफ, अच्छा, that means all the parts are not changing its position, right? They are fixed respectively, right? So Yes, sir. you'll get translatory motion and rotatory motion, rotational motion, दोनों मोशन इसमें तुम पाओगे।
जब हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे तब दोनों के तुम यू हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ देम, दैट इज रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, राइट? So, then you will write what is the translation equilibrium, what is rotational equilibrium, right? जो हमने यहाँ पर देखे हैं। तो ये रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, आइदर ट्रांसलेटरी मोशन करेगा और रोटेशनल मोशन करेगा। हमने यहाँ से ये देखा है, यहाँ पर हमने देखा है लिनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, जो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये सब कंजर्व रहेगा, राइट? लिनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। And what is the meaning of conservation? That is, either the linear velocity or angular velocity is zero, or the linear velocity or angular velocity is constant, right? That means no linear acceleration is there. No linear acceleration is there. सर हाँ बताओ। सर रोलिंग मोशन हाफ ईयरली में आएगा? रोलिंग मोशन कहाँ है, इसके बाद में है क्या? है हाँ सर। रोलिंग मोशन सिलेबस में लिखा है, ये तो नहीं है लिखा है रोलिंग। सर पर कुछ, हाँ सर है तो आप जो मेरे को एक तो स्लिप भेजे। हाँ तो करवाएंगे, ओके। नहीं सर, नहीं लिखा हुआ रोलिंग मोशन तो। ध्यान देना, लिखा है। अच्छा, हम नेक्स्ट डे उसके बारे में देखते हैं क्या है। हम आफ्टर आई विल वॉच द सीरीज प्रॉपर्ली, दैट कंफर्म। जस्ट कंसंट्रेट, वो पूरा भूल चैप्टर जाते है। हैं। हाँ, यहाँ पर तो छोटा छोटा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाद में इजी हो जाएगा। सो इन इक्विलिब्रियम दैट कैन बी linear or angular, you are getting constant angular linear velocity, sorry, constant linear velocity or zero linear acceleration, or constant angular velocity or zero angular acceleration, right? और तुम पूछोगे सर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, राइट? पर तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, टॉर्क भी जीरो होगा, टॉर्क भी यहाँ से जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा। क्लियर? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर है? दोनों का डेफिनेशन लिखोगे, इसके बाद तुम इसका डेरिवेशन लिखोगे, एक्सटर्नल फोर्स क्या है क्या नहीं है। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा, अगर एफ जीरो है तो डी पी डी टी जीरो है, अगर डी पी टी जीरो तो वी कांस्टेंट है, ठीक है? और रोटेशन के लिए क्या है, टॉर्क जीरो है तो अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है तो ओमेगा कांस्टेंट है। ओके, यहाँ से हमने ये देख लिया। इसके बाद जो आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन देखना पड़ेगा। यू हैव टू लुक एट द पोटेंशियल, हाउ द पोटेंशियल इज चेंजिंग और नॉट, or you have to look at the position of the center of mass, right? Position of the center of mass. Or next you have to look at moment of inertia, function of moment of inertia, right? Definition of moment of inertia. यहाँ से हमने देखा है एक पार्टिकल सिस्टम के लिए 1 2 3 4, ऐसा और भी पार्टिकल हो सकता है। हर एक के लिए मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, that will follow the formula IMR square, right? After that हम क्या देखेंगे, इन पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यहाँ से तुम्हें मिलेगा एम आर स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, और इसके बाद टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इसके बाद डायमेंशन आ गई, डायमेंशन बहुत इजी है, यूनिट भी बहुत इजी है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया दैट इज इन केस ऑफ फर्स्ट लॉ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक क्या करेगा, लीनियर मोशन को प्रिवेंट करेगा, दूसरा क्या करेगा, रोटेशनल मोशन को प्रिवेंट करेगा, राइट? यहाँ से हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इसमें हमने फ्लाई का फंक्शन देखा है, राइट? बाईसाइकिल का भी सेम फंक्शन है। उसके बाद हमने यहाँ पर रिलेशन देखा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो यही था आज का क्लास फॉर आवर्स। ओके ओके, I think it is 45 minutes class, right?
Okay, students. So join the school tomorrow. Okay, and we will continue from here. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, chalo. Good night. Thank you, sir. Good night. Sir, good night.